Hello everyone. Hello. Let's do this question. Okay. So first, let's read the question carefully. What is given here? Friction coefficient between two blocks shown in the figure is mu. So here friction coefficient between block surfaces is mu and the flow is smooth. So this flow is smooth. Here friction coefficient is 0. First case, we are getting asked what maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system. So we have to talk about value of F for which system will stay in equilibrium. Let's see what will happen when F is getting applied. So the moment you will apply F on a small mass M, so you are trying to basically move a small mass m, so friction will get arisen here और यहाँ पे friction तुम्हारा इस motion को oppose करेगा, so friction between two blocks will arise and this friction on a small mass m will act towards right. ठीक है. Also there is one more thing, जैसे ही आप small m पे F force लगाओगे, tension will also appear in the string. डन है. और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, सो अवे लगेगा. बट लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर, दिस इज वन सिंगल स्ट्रिंग, राइट? This is one single string. So throughout string tension has to be same. Why? Because string is ideal. We are dealing with NLM. So string is ideal, massless and inextensible. Tension will be same throughout. Also, इन दोनों एक string के दोनों segment के बीच में pulley आया है. Pulley is also ideal, massless and frictionless. And so tension on the both side will be same. ठीक है. So tension here getting applied is T and also here getting applied is T. Let's talk about a small mass M. So tension will get applied like this. अब चलो और भी फोर्सेस लिखते हैं. इस पे क्या लगेगा? mg डाउन and normal reaction will operate between these two surfaces. So normal reaction acting on a small mass m in the upward sense n. ठीक है. नाउ इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो आप क्या बोलोगे? मैम अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम कर लो और उस केस से हमें n का वैल्यू mg मिल जाएगा. अब आप हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम लिख डालो तो उस केस से मुझे मिलेगा t प्लस एफ शुड बी इक्वल टू कैपिटल F. नाउ यू विल से मी मैम पुट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमें एफ का वैल्यू क्या निकालना है? मैक्स. सो एफ मैक्स के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम ऑपरेट होगा. सो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू आप क्या रखोगे? म्यू एन एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन विद द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम? टी प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ. लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम ब्लॉक, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम है, सो कैपिटल एम मास इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम. इस पे देखो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे. टेंशन इधर की तरफ, फ्रिक्शन तो बॉटम सरफेस पर है नहीं कि ऑपरेट होगा. सो यहाँ एम जी बॉटम सरफेस और बिगर ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, लेट्स से एन डैश. नाउ देर इज टर्न ऑफ राइटिंग आई मीन रिएक्शन पेयर्स. सो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा है. कौन कौन? फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल, राइट? सो ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल एम, आई मीन ये स्मॉल एम का सरफेस ले लो और यहाँ पे ये कैपिटल एम का सरफेस ले लो. सो सरफेस ऑफ कैपिटल एम अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल एम in this direction. So reaction pair of this friction will appear on the upper surface of bigger block in this direction. ठीक है. So that reaction pair will appear here. और ये वाला फ्रिक्शन का भी वैल्यू कितना होगा जो हमने प्रीवियस लिखा था? सो म्यू एन, नॉट एन डैश, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन ऑपरेट नहीं हो रहा. वी आर सिंपली राइटिंग द रिएक्शन पेयर ऑफ प्रीवियस वाला फ्रिक्शन, राइट? ऑल्सो एम ने बिगर ब्लॉक के सरफेस को डाउन प्रेस किया था, उसी वजह से ऑन स्मॉल एम नॉर्मल रिएक्शन appeared in the upward direction, right? So reaction pair of this n will also appear on bigger block, or you can say action pair it is this. So कैपिटल एम पे और क्या फोर्स लगेगा? एक फोर्स लगेगा तुम्हारा ये वाला भी पेयर आएगा. ठीक है. सो अगर आप एम मास का क्या लिखते हो, क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक डायग्राम अगर आप लिखते हो तो ब्लॉक डायग्राम में क्या बनाओगे? एम जी नीचे की तरफ, एन डैश ऊपर की तरफ. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ और इन दिस डायरेक्शन देयर इज टेंशन
and in this direction there is friction. So if you here talk about vertical equilibrium say you can say n plus mg is equal to n dash. So if somebody is asking you the value of n dash, you can write n का value here. n क्या होता है? Small mg. That is not getting asked here, so let's ignore that. Horizontal equilibrium के लिए आप क्या लिखोगे? T is equal to F. सो दिस इज इक्वेशन 2. अब देखो इक्वेशन 1 और 2 पे फोकस करो. 1 पे क्या मिला था? टी प्लस म्यू एम जी इक्वल टू एफ. अभी हमें क्या मिला है? टी इक्वल टू एफ. सो इसको आप क्या करो ना, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करो. टी इक्वल टू एफ. एफ इज फ्रिक्शन फोर्स. सो एफ का वैल्यू एफ प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ. और एफ किसके बराबर है? म्यू एम जी. सो एफ मैक्स का वैल्यू हमें क्या मिला? 2 म्यू एम जी. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर ए. Done. Now what we are getting asked in B. Suppose horizontal force applied is double of that found in part A. अगर डबल हो गया है, find the acceleration of two masses. टू masses का acceleration क्या होगा? तो ध्यान से देखो, अगर आपने बिगर ब्लॉक पे सॉरी स्मॉलर ब्लॉक पे अगर फोर्स को F max से 2F max कर दिया, तो डेफिनेटली इट equilibrium now cannot occur because maximum friction, I mean जब F external F max के बराबर था, then it was able to keep system in equilibrium. Now it is double of that, equilibrium will get disturbed. ठीक है, it will no longer stay in equilibrium, motion will occur, acceleration will come into scene, and we have to find the value of that acceleration. ठीक है. सो टू एफ मैक्स जब लगेगा तब आप एक काम करो, यहाँ पे यानी कि 4 म्यू एम जी वैल्यू का फोर्स लग रहा है एफ. यहाँ पे टेंशन टी अगेन, और फ्रिक्शन ऑपरेट होगा मैक्सिमम, राइट. सो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा. अब आप पहले ब्लॉक की बात करो, फर्स्ट ब्लॉक के लिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम को चलो अब नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है इन हॉरिजॉन्टल सेंस. बट बिफोर वी जंप इनटू कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, लेट्स ट्राई टू सी how acceleration of a small mass m and capital mass m will be related. आप ध्यान से देखो, ये दोनों ब्लॉक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. सो व्हाट यू थिंक? सपोज कर लो स्मॉल मास m is moving towards left by distance x. by what distance m will move and in which direction? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अगर m x की तरफ मूव करता है तो ये स्ट्रिंग भी इस साइड x की तरफ जाएगा, and that extra string of x length will come from this segment, right? और ये segment extra length कब देगा? If capital mass M is moving in this direction with x by x. ठीक है. सो अगर तुम्हारा स्मॉल मास m v वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ जाता है तो कैपिटल मास m राइट की तरफ जाएगा v वेलोसिटी से, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद सिंगल स्ट्रिंग, सो देयर मोशन इज लिमिटेड. Their motion has a constraint, and that constraint is what? Both will have same displacement, both will have same distance in the opposite directions, both will have same speed in the opposite directions, and both will have same acceleration in different direction, in opposite directions. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है. सो चलो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सो इस पे फोर्स लगा इस साइड में 4 म्यू एम जी. आई एम कैलकुलेटिंग फॉर स्मॉल एम. फ्रिक्शन लगा इधर, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी. एंड टेंशन भी लग रहा है, टेंशन को लिखते हैं. टेंशन इज दिस, एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी आई हैव टेकन इन दिस डायरेक्शन ए. सो इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हो, नेट फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट. सो 4 म्यू एम जी हैज टू बी ग्रेटर देन टी प्लस म्यू एम जी. सो माइनस कर दो, दैट विल गिव यू द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड दैट इज इक्वल टू एम ए. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 3 mu mg minus t is equal to ma. Let's call it equation 1. Now let's write the block diagram of capital mass m. Again, friction, reaction pair of friction will act here. F, that is your how much? Mu mg. And tension will act in this direction. Acceleration is in this direction. So for this block, you will write what? T minus mu mg. Because acceleration in the right is in the right direction, net force has to be in the right direction. So mu mg equal to ma. So this is equation 2. अब आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लो. अगर आप लिखते हो तो क्या मिलने वाला है बताओ? t minus mu mg
इक्वल टू हाउ मच ma. वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, राइट? इन दोनों को इक्वेशन, इसको थर्ड मान लो या टू ही, सेकेंड इक्वेशन ही है, उसको रीराइट किया है हमने। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो आप, ऐड कर लो, टी टी विल गेट कट एंड यू विल गेट 2 म्यू एम जी इज इक्वल टू m प्लस एम ए। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, आ रहा है 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई m प्लस एम। This is going to be the answer. And acceleration of both the blocks will be in which sense? It will be in the opposite direction. So हमारा first case का answer ये था, second case का answer ये है. ठीक है? I hope you have understood the question and I hope you will be able to do such questions if you get further ahead. So what you have to do is you have to write constraints carefully. Constraint बहुत easy था यहाँ पे and you don't have to miss on reaction pair of friction also. So that also you need to keep in your mind. I hope you have understood it. Thank you. But even if you are having any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you.